नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। मैं हूं तान्या नीजा और ये है एक मार्केट टुडे का एक नया शो। आपको इस शो में हम बताएंगे कि सारी जो मार्केट से जुड़ी जानकारी है वो आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए वो भी आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। और देखिए, मार्केट्स की तरफ अगर आप अभी नज़र डालेंगे तो काफ़ी शांत माहौल, ज़्यादा कुछ देखने को जो एक्शन है वो नहीं दिख रहा है। आज के सत्र में 65,844 का लेवल, सेंसेक्स पे लगभग 90 पॉइंट्स की गिरावट और 25 पॉइंट्स की गिरावट के साथ फ्लैटिश नोट पर ट्रेड करता हुआ निफ्टी 50 आपको इस वक्त दिखाई देगा। 19,570 का जो लेवल है इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर हमें देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ अगर नज़र डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको हरे निशान में ज़रूर दिखाई देंगी। जो उनसे सपोर्ट है वो आज भी कायम है और हमने देखा है कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर स्पेस ने काफ़ी शानदार जो परफॉर्मेंस है वो दिखाई है। तो 37,928 का लेवल मिड कैप पे और स्मॉल कैप में 11,760 का जो लेवल है इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। चलिए इस वक्त हम जो टॉप गेनर्स हैं उन पर भी नज़र डाल लेते हैं एक बार और देखते हैं कि कौन से वैसे स्टॉक्स हैं जिनकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। एसबीआई लाइफ काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है कि प्रॉफिट बुकिंग इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली है। हालांकि आज के सत्र में ये काउंटर जो है वो तेज़ी दिखा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प जो हार्ले डेविडसन की सेल्स की जो ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले हैं 25,000 से ज़्यादा, उसका सीधा इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर काउंटर पर 4% तक की तेज़ी। और सिप्ला तो देखिए टॉप परफॉर्मर बना ही हुआ है काफ़ी सारे ट्रेडिंग सेशन से। 1267 का लेवल, वहाँ पर कुछ चुनिंदा आईटी काउंटर्स इस वक्त तेज़ी दिखा रहे हैं जैसे कि विप्रो टेक महिंद्रा और टाटा कंज्यूमर, एक और ऐसा स्टॉक जो टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल है। ऑन द फ्लिप साइड हम कुछ लूजर्स की तरफ भी नज़र डालेंगे, बट एसबीआई, एशिया मोटर्स, ये वो और तमाम टॉप गेनर्स। लूजर्स की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो हिंडाल्को देखिए, जो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स हैं उसमें 40% की गिरावट हमने देखी है प्रॉफिट में। कहीं ना कहीं वो जो दलाल स्ट्रीट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अच्छी नहीं लग रही है। 455 का जो लेवल इस पर्टिकुलर काउंटर पर। पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइजेस, ये वो और तमाम काउंटर्स जो आज की टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। एम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आफ्टर Q1 हमें देखने को मिला है। हालांकि आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। JSW स्टील और डीवीज लैब, ये वो और टॉप लूजर्स आपकी सामने स्क्रीन पर। देखिए, एक स्पेस मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लेके आए स्क्रीन पर, और वो है PSU स्पेस, निफ्टी PSU बैंक स्पेस। उसमें जो एक्शन है वो पूरा वहीं पे ही दिख रहा है। तमाम स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे कि इंडियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक, 6%, 11% की तेज़ी जो है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आज देखने को मिल रही है। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो ये स्पेस जो है वो एक काफ़ी टॉप परफॉर्मिंग स्पेस के रूप में आज हमें उभरता हुआ ज़रूर दिखाई दिया है। हालांकि अब एक काम करते हैं, जो हमारे आज के मेहमान हैं उन्हें शामिल कर लेते हैं शो में, क्योंकि उनसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट्स की जो चाल है वो अब आगे कैसे रहने वाली है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मंदर जामसन देकर, जो कि डायरेक्टर है प्रिसीजन टेक्निकल एनालिसिस के। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड आप हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े। सबसे पहले टेक्निकल चेक ले लेते हैं फटाफट आपसे, क्योंकि ये कंसोलिडेशन का फेज़ है जो हम देख रहे हैं। अच्छी खासी तेज़ी हमने पहले हाफ में देखी है कैलेंडर ईयर के। अब हमने देखा है प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए और आज का सत्र भी बहुत शांत है। आगे चलकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और किस तरफ जो रुख है वो रहने वाला है? तानिया जी, गुड आफ्टरनून और धन्यवाद आपने मुझे इस शो में बुलाया। देखिए, ये इवेंटफुल वीक है। थर्सडे को एक तो आरबीआई पॉलिसी आएगी, तो हमें पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट्स पे आरबीआई का क्या स्टैंड है। प्लस गवर्नर का जो कमेंट्री होगा वो इम्पोर्टेंट होगा इकोनॉमी से रिलेटेड। और दूसरा इम्पोर्टेंट डेटा फैक्टर जो आएगा वो यूएस इन्फ्लेशन है। तो हमें जैसे पता है कि पिछले एक साल से इन्फ्लेशन से ग्रस्त है पूरा वर्ल्ड। तो इन्फ्लेशन का, यूएस इन्फ्लेशन का डेटा जिस तरीके से आता है उस पे हमें आगे जाते हुए समझ में आएगा कि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ेंगे या फिर इंटरेस्ट रेट्स रुकने का एक टाइम शुरू हो जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तो मुझे लगता है कि तब तक तो बाजार इसी तरीके का, जिस तरीके का आज हमने एक बहुत ही नैरो रेंज में बाजार को ट्रेड करते हुए देखा है,
आज देखिए निफ्टी एक 100 पॉइंट के रेंज में बना हुआ है, बैंक निफ्टी एक 150 पॉइंट के रेंज में बना हुआ है। तो इसी तरीके का एक नैरो रेंज भी हमें कल और परसों भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड करेगा, तो इंडेक्स के बाहर इंटरेस्ट रहेगा। अर्निंग्स तो शुरू है, और जिस तरीके की कंपनीज अर्निंग्स अनाउंसमेंट आती है कंपनीज से, तो उस तरीके से हमें उन स्टॉक्स में मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक ओवरऑल कॉशियस व्यू है, तो जो स्टॉक्स भागे हुए हैं उनमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, और जो स्टॉक्स भागे नहीं है, अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, तो वहां पे इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके का एक थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है अभी भी इंडेक्स के लिए, तो वो अभी भी इंटैक्ट है। तो चिंता वाली बात है नहीं, एक कंसोलिडेशन का फेस है। एक बार ये कंसोलिडेशन हो जाता है तो उसके बाद मार्केट को वापस स्ट्रेंथ मिलेगी एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। ओके, एब्सोल्युटली। और अगर आप कुछ चुनिंदा फार्मा काउंटर्स पर नज़र डालेंगे तो उनमें जो तेज़ी का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं बात कर रही हूँ अगर आप सिप्ला की तरफ ही नज़र डालें तो कई ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा, स्पेशली आफ्टर Q1 अर्निंग्स, की स्टॉक ने जो है अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। तो आपकी जो राय है सिप्ला पे, और कोई ऐसी टेक्निकल बेट्स जो आपको अच्छी लग रही हो फार्मा सेक्टर से? तनीज देखिए, सिप्ला तो बहुत बढ़िया लग रहा है। एक तो शॉर्ट टर्म चार्ट अगर देखते हैं तो एक 1220 1230 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है। वॉल्यूम्स भी बहुत जबरदस्त ट्रेड कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि इस स्टॉक में हमें एक 1400 1450 तक की अपमूव जरूर देखने को मिल सकती है। तो अगर किसी की पोजीशन, यानी पोजीशन अगर इस स्टॉक में हो, तो वो तो राय रहेगी कि होल्ड करनी है 1200 के स्टॉप लॉस के साथ। प्लस किसी को अगर फ्रेश एंट्री लेनी हो तो वो भी कर सकते हैं। 1200 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 1400 1450 इस तरीके का इस स्टॉक में ऊपर की तरफ टारगेट बनेगा। तो शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी बहुत बढ़िया लग रहा है। प्लस लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी अगर देखते हैं तो उसी तरीके का एक ट्रेड है। 1180 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना था, वो ब्रेक करके ऊपर चला है। तो जब तक उसके ऊपर है तब तक ये जो स्ट्रेंथ है ये बनी रहेगी। और ये मूव अभी स्टार्ट हुई है, यानी पिछले 2-3 महीनों से ये मूव स्टार्ट हुई है। तो मुझे लगता है कि ये मूव और कंटिन्यू हो सकती है। और सिप्ला को अगर छोड़ते हैं तो बाकी जो सेक्टर है तो एक एक ही नजरिए से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक मिक्स काइंड ऑफ अ व्यू बन रहा है। क्योंकि अगर आप ऑरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक को अगर देखो, तो पिछले 6 महीने में स्टॉक डबल हो चुका है। तो 400 से स्टॉक 800 तक चला है। तो अब करंट लेवल्स पे एक फ्रेश एंट्री नहीं बनेगी यहाँ पे। लेकिन उसके से अगर आप डिवीज लैब देखो, तो रिसेंटली एक जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 3800 के आसपास, वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है। तो इसमें एक फ्रेश शॉर्ट टर्म वाला ट्रेड जरूर बन सकता है। अपसाइड कहां तक बनेगा, तो 41 4200 तक का अपसाइड बनेगा। स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, तो 3750 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये एक बढ़िया लग रहा है। और दूसरा जो स्टॉक मुझे इंटरेस्टिंग लगता है वो है लॉरस लैब्स। लॉरस के केस में भी अगर आप देखो तो पिछले 1 साल से स्टॉक डाउन ट्रेंड में बना हुआ था, और फिर हाल ही के 3-4 महीने स्टॉक ने एक बेस बनाया और फिर एक स्टेडी अपमूव में चला। और रिसेंटली जो एक इस बेस फॉर्मेशन का जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 375 380 के लेवल्स पे, वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला। तो जब तक 380 के ऊपर बना हुआ है तब तक इसमें व्यू पॉजिटिव रहेगा। अपसाइड कहां तक बनेगा, तो मुझे लगता है इसमें अपसाइड 460 480 500 ये लेवल्स होंगी ऊपर वाली। तो एक 10 to 20% काइंड ऑफ एन अपसाइड लॉरस लैब्स में पॉसिबल है। अगर कोई इसमें एक फ्रेश पोजीशन बना लेता है तो स्टॉप लॉस 370 का होना चाहिए। 370 के स्टॉप लॉस से इसमें फ्रेश पोजीशन बन सकती है। तो डीवीज और लॉरस लैब्स ये दो स्टॉक्स हैं कि जो करंट लेवल्स पे भी बढ़िया लग रहे हैं। ओके, एब्सोल्युटली। डीवीज लैब और लॉरस लैब्स और डीवीज लैब, ये दोनों स्टॉक्स आप अपने रडार पर ज़रूर रखिएगा। और अगर, क्योंकि मैंने शो की शुरुआत में भी बात की पीएसयू बैंक स्टॉक्स की, अगर हम वो स्टॉक्स आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आए, इंडियन बैंक देखिए, महाराष्ट्र बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। और तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो सारे स्टॉक्स हैं, बैंकिंग जो क्षेत्र है उसमें जो हमने रैली अभी आते हुए देखी है फर्स्ट हाफ में, उसमें पीएसयू बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है। हालांकि देखिए एसबीआई के नंबर्स पर अगर आप नज़र डालेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो था वो फिगर एक स्ट्रीट के मुताबिक नहीं आई। तो कहीं ना कहीं हमने प्रॉफिट बुकिंग आती हुई भी देखी है। बट कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको अच्छे लगते हो इस स्पेस से, और क्यों ये सारे जो स्टॉक्स हैं जिसमें आज हम इतनी शानदार तेज़ी देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया जाए?
तनी जी, देखिए, अगेन पीएसयू बैंक्स के केस में अगेन मिक्स्ड काइंड ऑफ व्यू है। यानी अगर आप कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखो तो वो स्टॉक्स में बहुत ही जबरदस्त मूव हमने देखी, और अब करंट लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो उनमें एक बाय का व्यू नहीं बनेगा। लेकिन अब जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र बैंक देखिए, या इंडियन बैंक देखिए, बैंक ऑफ इंडिया देखिए, यूनियन बैंक देखिए, या फिर पीएनबी देख लीजिए, ये जो चार पांच स्टॉक्स हैं इनमें फ्रेश इन्विटेशंस बन रहे हैं, यानी इसमें एक फ्रेश पोजीशन बन सकती है। महाराष्ट्र बैंक से स्टार्ट करते हैं। आज देखिए बहुत ही जबरदस्त मूव है, 7% अब फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स भी बहुत जबरदस्त ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट पे ₹35 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो ब्रेक करके ऊपर चला है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक फ्रेश अप मूव बनेगी। जिसको पीएसयू बैंक्स में इंटरेस्ट है वो ये स्टॉक जरूर खरीदी कर सकता है। इसमें अपसाइड जो है वो 40 से 42 तक का एक अपसाइड बनेगा। सो 10 to 15% ऑफ अपसाइड इस स्टॉक में बन सकती है। जो स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेड के लिए वो 3350 का होगा। 3350 के साथ महाराष्ट्र बैंक में लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। उसके साथ इंडियन बैंक अगर आप देखो, इंडियन बैंक में भी बहुत जबरदस्त मूव बनी है। इसमें जो रेजिस्टेंस बना था 340 350 के लेवल्स पे, वो ब्रेक करके ऊपर चला है। तो अब ये कहाँ तक चल सकता है, तो मुझे लगता है ये 450 480 तक का इसमें मूव बनेगा। तो अगेन 10 to 15% काइंड ऑफ एन अपसाइड इस स्टॉक में भी बन सकती है। इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, तो 340 के लेवल पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ये सारे जो स्टॉक्स हैं इनमें जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग वाला स्टॉक लगता है वो मुझे पीएनबी लगता है। ये पीएनबी अगर आप देखो तो इस स्टॉक में पिछले 10 साल से एक डाउन ट्रेंड बना था। फिर उसके बाद 2020 के बाद से स्टॉक ने एक बेस बनाया। बेस बनने के बाद, बेस बनाते वक्त 45 और 25 इस तरीके का एक रेंज बना था स्टॉक का। फिर उसके बाद पिछले साल इस स्टॉक ने वो रेंज ब्रेक करके ऊपर चला, 55 के ऊपर कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले महीने ये लेवल ब्रेक करके ऊपर चला, यानी एक स्टेडी काइंड ऑफ अ मूव बन रही है। चेंज ऑफ ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है। और जो कोई स्टॉक में इस तरीके का चेंज ऑफ ट्रेंड देखने को मिलता है वो आगे जाते हुए मल्टी बैगर बनता है। तो मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स में इंटरेस्टिंग डार्क हॉर्स अगर कोई होगा, मल्टी बैगर कैंडिडेट अगर कोई होगा, तो वो पीएनबी हो सकता है। पीएनबी के केस में अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी हो तो ₹50 का स्टॉप लॉस होगा, और इसमें अपसाइड बनेगा वो 90 से लेके ₹120 तक का अपसाइड बन सकता है। ओके, एब्सोल्युटली। और लास्टली सर, मैं आपसे आपकी जो टॉप टेक्निकल आइडियाज़ हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं शो के अंत में। कौन से वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आप नियर टर्म के लिहाज से बुलिश हैं? अ, देखिए, पहला स्टॉक तो होगा रेलीगेयर। रेलीगेयर के केस में पिछले 2 साल से 192 से लेके 195 इस तरीके का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, और एक नैरोइंग काइंड ऑफ कंसोलिडेशन में बना था स्टॉक। तो फ्राइडे को ही ये लेवल ब्रेक करके ये स्टॉक ऊपर चला है। कल भी इसके ऊपर सस्टेन किया, आज भी ऊपर सस्टेन किया ये बैंड के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग सा इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट होगा। तो 1 साल का अगर किसी का व्यू हो तो रेलीगेयर में इंटरेस्ट रखना चाहिए। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 180 का होगा, और इसमें अपसाइड जो बनेगी वो मुझे लगता है कि 280 तक की इसमें अपसाइड बन सकती है। और दूसरा जो स्टॉक है वो सीक्वेंट है। सीक्वेंट के केस में एक शॉर्ट टर्म व्यू है, यानी अगर किसी का 2 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते का व्यू हो तो ये स्टॉक एक बढ़िया लग रहा है। इसमें 96 97 लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस बना था जो कल स्टॉक ब्रेक करके ऊपर चला है। तो उसके ऊपर जब तक रहता है तब तक इसमें ऊपर में 120 115 से लेके 120 तक का टारगेट बन सकता है। तो इसमें जो थैंक स्टॉप लॉस होगा वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 94 के लेवल्स पे। सो 94 के लेवल्स के साथ इसमें फ्रेश पोजीशन बन सकती है। ओके, एब्सोल्युटली। सो रेलिगेयर एंटरप्राइजेज एंड सीक्वेंट साइंटिफिक, ये वो दो स्टॉक्स हैं जिन पर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। और इसी वंडरफुल नोट पे बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त निकाला, आपने हमारे साथ ये टॉप टेक्निकल आइडियाज़ आज यहाँ पे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रनीश। तो इसी के साथ वक्त आ गया है कि हम इस एपिसोड को यहीं समेटें। और देखिए, अगर मार्केट क्लोजिंग की तरफ आप नज़र डालेंगे तो लाल निशान में ही हमने इस आज की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर दर्ज होती हुई देखी है। 106 पॉइंट्स की जो गिरावट सेंसेक्स पर 65,846, और 26 पॉइंट्स का फ्लैटिश नोट पर आप निफ्टी बोल सकते हैं। 19,570 का जो लेवल है वो निफ्टी पर आज हमें देखने को मिला है। अब यही देखना होगा कि इस जो कंसोलिडेशन फेज़ हम देख रहे हैं ये आगे चलकर क्या रुख लेता है। तो इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है बीटी बाज़ार के साथ। तो में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।
We're joined by Dr. D.K. Joshi. He's the chief economist of CRISIL. Thank you so much for joining us today, sir. We're meeting here in context of the Look Forward India Moment journal that has been put out by S&P Global. So, what, according to you, are going to drive this growth? Are going to drive this growth story of India from a macro perspective in the next 8 years? Well, I think there are three key drivers which economists look at. Number one is capital, number two is labor, and number three is efficiency. Now, I think when you talk of capital, it's about investments, and we are already seeing government take a lead on the investment front. We are waiting for the private investments to fully fructify. I think the time is ripe for private investments to take off. But because of uncertain environment, I think full animal spirits are not being unleashed. Private sector has healthy balance sheets. It benefits from creation of infrastructure by the government. The PLI scheme also front loads private investment. There is foreign interest in investing in India. All these things are going to support private investments over the next couple of years. So that's the capital part. It will be the biggest driver of growth. Then comes efficiency. Part of the efficiency comes from infrastructure creation, which improves connectivity. It reduces logistics costs. So that is, I think, is going to happen. So I think that's going to promote efficiency. The more important part is that the digitalization drive that I think government has pushed. I think that's going to play a very important role in pushing growth up or improving the efficiency of the economy as a whole in three ways. Number one is it is a platform for innovations. Number two, it is allowing government to reduce leakages in its transfers, subsidy transfers. And then finally, I think the third element of efficiency that comes from digitalization is payment systems, which I think others are trying to emulate now, and I think India has a leadership position. I think in digitalization, particularly from this standpoint, and I think it has lessons to offer to many other G20 countries on financial inclusion, on payment systems, etc. So that's an interesting point. And also, when you spoke during the presentation, you also said that India has been the service sector driven economy. India has been a service sector driven economy. The share of the service sector in exports has been increasing. But do you think that we could, in a way, now that the global corporates are looking at a China plus one policy, do you think we could position ourselves to be that plus one in the sense of manufacturing hubs opening up in Yeah, India? I think now what we will see is that manufacturing will grow faster than it grew traditionally. So its share in GDP is going to rise faster, but it's going to be lower than the services. Services share will also rise. But I think the manufacturing, the balance will improve somewhat. I think so. We'll have to walk on both legs, both manufacturing and services, because both are offering you opportunities for the domestic economy as well as for the export economy. And so, could you speak a bit about the policies that have helped so far, in aiding the manufacturing sector, or some suggestions or some issues that you think can be addressed to improve this? Well, I think the one interventionist policy from the government, which is the PLI, I think that has fast forwarded investments. I think particularly in pharmaceuticals, electronics, etc. I think we need to move faster on the other sectors, and we need to get more clarity. So I think that is what needs to be done right now. And I think apart now in manufacturing. Electronics items and exporting them, we are doing the last mile kind of thing. I mean, putting it together. We need to create an ecosystem around it to get the full supply chain. I think that thinking has to start, and the work on that has to start. Then you will get the full benefits of specializing in electronics. It's going to take time, but this is the first step. Okay, so last question. You also put out some targets in the sense that you see the Indian economy on average growing at around 6.7% for the next 8 years, and you have around a $6+ trillion economy. And could you share a bit more insights into that for our viewers? Well, I think, see, what's happening is so we have a forecast of 6.7% per annum. Now, India has demonstrated that kind of growth earlier because a decade before the pandemic, we grew at 6.6% per annum. This is only slightly higher, but the base is larger. So there's something called compounding effects. So the compounding effects are going to be very big, and you're crossing the income threshold where I think the
demand for a variety of goods and services will rise if this growth rate is sustained. I think the challenge is to make everyone participate in the growth process, which is creating employment. Thank you so much for speaking with us, sir. Thank you, sir. If you like the video, do like, comment, share and subscribe. How about Ingenious India? That's one of our topic as far as cap goods sector or infrastructure is concerned. So Engineers India, what we have seen is that the order books is very pretty robust right now at 12,000 crore rupees, which is almost 3x the FY23 revenue. The annual profit which the company churn out is around 450-500 crore, trading at a less than 20 price to earning multiple. So what we believe is that the fair value of Engineers India is more than 200 rupees. And if somebody is slightly a longer term investor and have got an investment horizon of 6 to 12 months, he should definitely plow his money in Engineers India with a price target of 200 over the next 6 to 12 months. Right. Let's discuss Ingenious India in a bit of detail. The company, of course, is a PSU stock and has been doing pretty well over the last 6 odd months. If you see the chart, we had seen a low of about 74-75 rupees somewhere in April of this year, and now at 149. Of course, if you look at the all-time high, the stock is about 270, but those prices were seen in the month of May of 2010. So we are far away from that. The most immediate high on the charts, on a monthly chart, is somewhere like December 2017, when you saw a price of 203. But the stock is on a gallop, and like all PSUs that have been under-owned and underappreciated, we've seen a very, very strong move coming in. But even at these levels, the price earnings is just 20. If you see the market capitalization, it's at about 8,400 crores. And the previous 12-month earnings are in the vicinity of 415 to 420 crores. Let's look at some other details. The trailing 12-month revenue is about 3,300 crores, and the company is debt-free. That's a very big positive. And it specializes, Ingenious India specializes in drawing up refineries and projects for India's oil marketing companies, and of course has a very, very strong footprint in the Middle East. This was about Ingenious India, Mr. Agarwal. Anything in the railway space that catches your fancy, which is already buzzing and could probably see better days? So amongst the railway, I like RVNL Rail Vikas Nigam Limited. Current market price is around 125-130 rupees. Recently, government did OFS also, and it was closed near to the price band of 121-122 rupees. The current market cap is around 26,000 crore rupees. And if I look at financial number, FY23 was the year where company posted around 20,000 crore top line, 1,400 crore bottom line, with an EBITDA margin of around 6 to 7%. And if I look at order book, it's a pretty robust, currently at 55,000, 60,000 crore. So this provides a pretty healthy visibility of revenue over next 18 to 24 months. On the top of that, company has recently won an order to supply Vande Bharat coaches to the Indian Railways. The commercialization of the same is likely to begin after 24 months. So that will again add kicker for earning growth in FY25 and 26 onward. So pretty long visibility in terms of earning for RVNL. Obviously, one of the key beneficiary of the capex capex spent by the Indian government on the railways. And I feel that in terms of valuation, again, it's trading very cheap. So at current market price, the market cap is 26,000 crore, and what we believe is that in next 2 years, the company has got a potential to deliver profit of around 1,800 crore rupees. So again, very cheap on valuation front, price to earning multiple below 20x, debt-free company. So what we believe is that the fair value of this business is around 200 rupees. And again, it should be part of your portfolio to ride on the railway growth story of India.
Right. Rail Vikas Nigam Limited is, of course, again a government PSU. It undertakes project development and implementation, as well as also provides resources for mobilizing this kind of a business. They do doubling of lines, gauge conversion, railway electrification workshops, etc. And Mr. Agarwal has very rightly pointed out it has a price earnings of just 18, and of course a price to book of about 3.5. Let's get Mr. Jani into the conversation and try to get a feel of how RVNL looks on the charts. Remember, the OFS was very well subscribed, and the all-time high that we've seen on the counter is somewhere like 140, 145. Let's ask Mr. Jani about his technical inputs on RVNL. Yes. So if we check RVNL chart, recently we have seen a very super move on daily time frame. Stock price gave a breakout somewhere around 80, 82, and then we have seen in a very short time, stock price has touched is 140, 148 level. Since then, this happened in May 2023. Till now, we have seen a stock price is trading into a very small range of 130 to 112. Last time also we have discussed RVNL. That was the day when the OFS is announced and action is going on. Currently, we are seeing that RVNL chart is very smooth. Price actions are taking a support at 20 days and 50 days moving average. Considering the daily chart price and the volume and the momentum indicator, we would like to go long. The stop loss would be below 120. And looking at current market price and looking at the rectangle pattern, if stock prices continue sustaining above 125, then there are very good chances that prices again retest its all-time high somewhere around 140. So looking at risk-reward ratio and current chart setup, we would like to go long. I'm repeating, 120 would be the stop loss, or any level below 120 would be the stop loss, and target will be above 140. That's a wonderful view. You can look at 140 on RVNL. If you like the video, do like, comment, share and subscribe. We are joined by Mr. Ajay Patil. He's the CFO of Cummins India, and the chart is in front of you. The numbers that came in a couple of days ago haven't been very well taken in by the market for 2 or 3 reasons. One was weak exports. Let's discuss this, Mr. Patil, in detail. What went wrong as far as the exports were concerned, and do you see any kind of recoup or reversal of trend that was there in the first quarter in the coming 2 or 3 quarters as far as exports is concerned, sir? Hi, good morning to all of you, and thank you for having me on the call. I think the reason for exports, as we stated on the earnings call, is twofold. One, what we have seen, and if you bring in the context of how the exports have been over the last 6 to 8 quarters, you would have seen sequentially the exports have been growing up consistently. Second is that from a end market perspective, we have seen to some extent a softening of demand in few end markets, notably in Middle East, Africa, Europe. And the third thing is, to some degree, an inventory rebalancing is what we expect to be occurring in the channel, thereby impacting the quarterly number, but which are coming out flat if you look at the read from a year-on-year perspective. So overall, what we expect from a revenue perspective, this is not specific to export per se, but the overall revenue guidance that we are given for the year is that we expect us to be growing at the rate which is 2x of GDP. And obviously, if we have to deliver on that, we have to find a way to grow our exports as well.
Okay. Mr. Patil, the numbers are flashing in front of us. It's been a fantastic performance that has come in both on the top line as well as bottom line. Yet the markets are disappointed. There's been a very, very sharp sell-off. Your margins have risen. There's been a sharp uptick on top line as well as the bottom line. What do you think is the market misreading in the numbers? I mean, as you would imagine, I mean, hard for me to say what the market is doing with respect to the price. Obviously, in our conversation on the earnings call, we provided a broader detailed commentary with respect to where do we see our business shaping out to be, where do we see the growth opportunities are. And importantly, we also reflected that in the guidance that was given for the year. Hard to say what the market is reacting to, but from our perspective, all we can say is that our domestic revenue have been pretty robust in terms of how they have grown year on year, sequentially as well. No doubt, there was an element of pre-buy in it as the CPCB 4 plus norms become effective July 1st. So an anticipated pre-buy occurred in the previous quarter. And number two, now that the Central Pollution Control Board has clarified that we can continue to have CPCB 2, which was the previous version of emissions. Those engines can be sold up until June of 2024. We do expect, to some extent, the revenue mix playing out between CPCB 2 and 4 for rest of the year. But overall, we feel quite optimistic with respect to the end markets. Our core end markets of infra, data center, commercial realty, healthcare, hospitality. We see demand holding up quite well, and that's a reflection into the guidance as well. Okay, absolutely. Good morning, Mr. Patil. Tanya this side from Business Today. The company mentioned in its call about the double-digit growth guidance for FY24. So can you elaborate on that? And if you could, quantify that number for us? Yeah, certainly. I mean, it's hard for us to pinpoint a number to say that it is going to be an X number of revenue growth. But what we started to think about is in a context of where our end markets and how they are performing. So as I said in my previous comment also, I mean, the end market for us, whether it is infra, data center, rental, commercial real estate, healthcare, hospitality, we see the demand holding up, number one. Number two, when you see it from a macros point of view, if the forecasted GDP for India, and we can take the estimate that we want to believe in, but could be ranging from anything from 6.25 to 7 percentage point, and add the extent of inflation in the economy, we definitely would like to outperform that from our growth point of view. And we feel quite optimistic and positive that the extent of visibility that we have, as well as the momentum that we are seeing in the order position, and dovetailing that with the macros, give us the confidence of saying that we'll have a growth of which is 2x of GDP. Mr. Patil, Cuban's India is, of course, a very well-known genset maker, and it has been, how should I say, the flag bearer of the rally that we are now seeing in the infrastructure space. If you see your own monthly stock price, and my apologies, I come back to it again and again because that is where lies the story. From a low of about 200 rupees in the depth of the COVID pandemic to a high of about 1700 rupees, you've pretty much redefined the capex-led rally that's come into the